Sairam, Sairam to all. यस। रोमिशा बताइए हमने हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। Sir, IT uses of IT. ओके, पुष्कर हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस करा था। सर आईटी के बारे में डिस्कस किया था हमने, ओके, यूज कहाँ कहाँ होता है। यस। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है ये हमने उसके इस पर डिस्कस करा था। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस करा था, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट करा था व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। सो नाउ इन एप्लीकेशंस ऑफ आईटी we are moving towards the first topic is how to use IT in medical field. First I represent my screen. Shrishti, are you here? Yes, sir. सृष्टि, यस। सृष्टि, आपको क्या करना है कि अगर कभी बीच में मेरा वॉइस ब्रेक होता है या कोई सेंटेंस नेटवर्क की वजह से कोई सेंटेंस प्रॉपर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बीच में ही बोल देंगे, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट द सेंटेंस। Yes, sir. ठीक है सृष्टि? Yes, sir. ओके। सो टुडे आवर टॉपिक इज IT in healthcare. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ IT। और मैंने आपसे जैसे लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि मेडिकल साइंस में IT का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपके सामने शो करा है दैट आल्सो कवर्स लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, वेरी न्यू न्यू टॉपिक्स आर देयर। सो फर्स्ट आई विल शो यू टू लिंक्स। There are some areas where IT is used. So these are the few areas.
we can interact in a really intuitive way with 3D representation of the body just right there in front of your eyes. Reach out and touch it. And it would be a breathing model, a living creature that it can offer so much more than a cadaver in a lab. EcoPixel wants to bring virtual reality to the medical world. The startup's new technology creates an interactive 3D view of CT scans. This is 360-degree imagery that helps doctors pinpoint the exact location of a disease. Knowing the problems that the docs have had for 40 plus years, of struggling with 2D views to create 3D information in the brain. That's been a challenge, and we had no technology to resolve that. This is a patient's CT, and we're importing about 300 images. That is a volumetric data set of the patient's head that happens to have images. All right, so show me what this is. First thing that you should see is you should see 3D. Ooh, it's like I'm reaching right into his head. Yeah, but also notice that if you move around the display, you're going to be able to see around that volume. And you also have the stylus. So the stylus controls this blue ray. When it's blue, it's not touching anything. When it goes through something visible, it turns green. And that's when you can press and hold the front button and move the data through this cut plane. Oh, that's wild. Look at that. Wow. You can also grab the cut plane that you can apply in any direction that you want to the data. So what I'd like you to do is put the ray into that aneurysm. Okay. Press the front button, pull it out. Oh, and you can pull that out. Wow. And twist it around. You can see around the aneurysm. Oh, that's crazy. Wow. And you can just leave it out and just put it over here. Your surgery. That is so wild. Look at that. By working with body parts instead of images. Why is that important for the doctor to be able to have a 3D image like this? Like, what is this helping them to do? When they use the stylus, they're actually reaching into the actual size of the patient. So it's almost like holding a scalpel and practicing your surgery very, very easily. Well, what it does for them now is it allows them to get a much more intuitive feeling of what they're looking at. The fact that when the doctors are saving this time and they're able to think more creatively, we're able to get much better clinical results and better workflow results. Most doctors view CT scans in 2D, meaning they can't see in and around all the details of your body, and it's harder to find the exact problem. It also takes a longer time to work on creating images to look at. EcoPixel's new technology could radically reduce time and cost for hospitals and patients by giving doctors a precise 3D image. Think of it like inner space, but instead of actually minimizing scientists and shooting them into your body, the new technology lets you see what's going on with 3D glasses and a special display. I've been using EcoPixel for both research and clinical purposes. And the application that I use most is for CT colonography, also known as virtual colonoscopy. Our goal is really to identify the precursor lesion that may develop into a cancer. And I think what the EcoPixel platform does is it really is a game changer. So not only is it engaging and interactive for the radiologist who uses it, but it allows us to identify the lesions just as well, if not better, and we're looking at larger portions of the colon at once so that it would be more time efficient. There are also certain types of lesions that this technique would be able to help us pick up better. These are the flat lesions of the colon. So the fact that you have this 3D model of the colon in what we call true 3D space, you can really manipulate it in a way that highlights lesions that are just too tough for us to pick up with the flatter displays. Well, I always say that every time we're able to pick up
a polyp that measures 10 millimeters or larger, that essentially you are potentially saving a life. Because these are the ones that have the most chance of them progressing to cancer. With lung cancer and breast and prostate cancer, where you're looking for the cancer itself, it's almost too late. What's the biggest challenge you have right now? Our biggest challenge is really getting this awareness in front of doctors. So we're very actively going to shows. Yes. Now, by watching these two videos, what do you understand by these two topics? चैट बॉक्स के थ्रू भी आप, अगर आप कुछ समझे हैं वीडियो को देखकर, तो आपको चैट बॉक्स के थ्रू भी बता सकते हैं, और अभी किसी को माइक अपना अनम्यूट करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. What do you understand by these two videos? Yes, okay. See, what is the difference between 2D and 3D? So, there is a use of 3D technology in medical science. 3D टेक्नोलॉजी के यूज से क्या हो रहा है कि आप पूरे ऑर्गन्स को प्रॉपरली देख सक रहे हैं, है ना. वहां पर आपने अभी देखा दोनों वीडियो में, 3D टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पूरे बॉडी पार्ट्स को इंटरनली देख सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं वहीं पर, एंड दे आर यूजिंग ऑल द सिस्टम्स. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इसमें 3D टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है मेडिकल साइंसेस में. नाउ नेक्स्ट इज, these are the areas, all of you read it, these are the areas where IT is used in all these fields: patient engagement tools, clinical decision support, electronic health records, physical examination and diagnostic testing results, facilitating information exchange. Some of the students already aware of these kinds of things: ECG, EEG, ultrasound, CT scan, है ना. So computerized machines are used in all these things. Okay, now we come on to the very interesting topic, and the topic is computerized axial tomography, magnetic resonance imaging machines, use of IT in diagnosis. ठीक है. Okay, so 9th A में से कोई भी एक स्टूडेंट अपने गूगल में टाइप करें कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन. 9th B में से कोई भी एक स्टूडेंट टाइप करे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन. और 9th A में से कोई भी एक स्टूडेंट अपनी शेयर स्क्रीन करेगा और वो इस टॉपिक के बारे में कुछ वीडियो दिखा सकता है, या हम कंटेंट पे डिस्कस करेंगे. Take few seconds and then we will discuss about these two topics. 9th A में से कौन कर रहा है, चैट में बताएंगे. नाइन्थ में से अपनी कौन स्क्रीन शेयर करेगा. नो वन इज रेडी इन 9th A. सर मैं हाँ हितेंद्र, आप करिए. सर सर्च क्या हाँ सृष्टि, आप करिए 9th B में से. हाँ, टॉपिक है
हाँ, 9th ए में से 9th ए के स्टूडेंट को करना है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। 9th बी में से किसी को करना है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ओके कार्तिक, हाँ कार्तिक एक और टॉपिक है, इसके बाद आपका टर्न आएगा। हाँ यस, दामिनी अभी और भी टॉपिक्स हैं, तो अभी पहले, हाँ फर्स्ट इज हितेंद्र इज गोइंग टू शेयर टॉपिक computerized axial tomography machine. Okay, yes. Okay, ठीक है. So all of you read the content. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 9th ए में से कोई दूसरा स्टूडेंट कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन का कोई वीडियो ओपन करके बताएंगे। चलिए, जब तक सृष्टि आप शेयर करिए। Yes, sir. क्या ओपन हो गया? ने पीडीएफ ओपन करा है। Yes, sir. फिर कुछ और ओपन करना है क्या? हाँ हाँ, कुछ और दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा वेबसाइट देखिए। ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। All of you read it. Okay, now anyone can open the video of first topic, computerized axial tomography. Sir, may I stop the sharing? हाँ ठीक है, आपने कंटेंट डिस्प्ले करा है, अब एक वीडियो देख लेते हैं इस पे। वीडियो कौन शो कर रहा है? Sir, your voice was not clear. सर वीडियो कौन से टॉपिक की लेनी है? वीडियो भी computerized axial tomography। Sir, your
voice is not clear. Sir, your voice I can give is you. lagging. Okay, wait. Anyone show the video on this topic? Magnetic resonance imaging. Second topic है magnetic resonance. दामिनी आप स्टार्ट करिए कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी पे. Sir, may I? Yes, sir. Sir, may I start? Sir, may I start? हाँ कार्तिक आप कार्तिक स्टार्ट कर दीजिए आप. ठीक है आपका रेडी है तो. सर मैं कर रही थी. हाँ कोई भी कर दो. कार्तिक के बाद दामिनी आप स्टार्ट करना. So CT scan comes under the category of computerized axial tomography. ओके ठीक है. दामिनी आप स्टार्ट करिए. सर टॉपिक. टॉपिक मैंने चैट बॉक्स में लिखा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. सर वीडियो दिखाना है. यस. ओके हरीश आप ईसीजी मशीन ले लो. ईसीजी मशीन का वीडियो दिखा देना. और अनुनीत आप ईईजी मशीन का वीडियो दिखा देना. ठीक है स्क्रॉल डाउन. एमआरआई वर्क. ओके स्क्रॉल डाउन.
देखिए इस पे वीडियो पे क्लिक करके देखिए रन हो रहा है। यस हाँ। नहीं वो माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। माइक अनम्यूट कर दो, आ जाएगा। ओके चलिए, नाउ हरीश। हरीश आप स्टार्ट कर रहे हो? रिटन कंटेंट करवा रहा हूँ। हरीश और अनुनीत में से कोई भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में या फिर रिटन कंटेंट? हाँ वीडियो वीडियो। ठीक है, हाँ सृष्टि आप रेडी सर करके ये रखो। नॉट क्लियर। ईईजी मशीन का करना है सृष्टि आपको, ईईजी मशीन। यस सर। जब आपका रेडी हो जाए तो आप स्टार्ट कर देना। So you have seen the computerized X-ray tomography machine or magnetic resonance imaging machine. There are few more areas. Electrocardiogram machine and then cardiac screening machine. These are the areas where IT is used. सर मैं वीडियो चलाऊं? Yes. Okay.
So use of electrodes. Okay. Positive and negative. So हो गया मैं चला कंटिन्यू Okay. Okay, Srishti, now you can start. Yes, sir. सर शायद वो गायब हो गया, मैं एक बार और फिर से ठीक है, ठीक है। हाँ, जब आपका रेडी हो जाए तब आप स्टार्ट करो। Electroencephalography, or EEG, is a technique used to measure the electrical activity of the brain. In EEG, electrodes are most commonly placed on the scalp of the patient, primarily to detect the electrical activity of neurons in the cerebral cortex. Typically, EEG does not record the activity of single neurons, but rather detects the signals created when populations of neurons are active at the same time. It mostly records signals from small areas of the brain surrounding each electrode. EEG primarily measures post-synaptic potentials, or changes in membrane potential that are elicited by neurotransmitters binding to receptors on the presynaptic membrane. EEG provides an image of electrical activity in the brain represented as waves of varying frequency, amplitude, and shape. It can be used to measure brain activity that occurs during an event, like the completion of a task or the presentation of a stimulus, or to measure spontaneous brain activity that happens in the absence of a specific event. The typical electrical activity that occurs in association with an event is sometimes referred to. ठीक है, सृष्टि बंद कर दीजिए. Stop your presentation. Yes, sir. So by this few presentation, now you get an idea of the use of IT in medical science. There are some more areas: blood sugar testing, blood pressure measuring machine, EEG मशीन अभी आपने देखा, कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन. There are some more areas where IT is used in medical science. So we discussed only, अभी हमने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पे डिस्कस करा है, IT in healthcare. There are so many applications. अगर हम एक एक एप्लीकेशंस पे वर्क करना स्टार्ट करें तो एक एक क्लास हमें चाहिए. ओके, तो हम लोग थोड़ा सा उसको लिमिट में, मैं आपको थोड़ा सा और चार्ट में बताऊंगा ताकि सो दैट वी कैन कवर द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी. जितना और बचा है उसको हम आगे कवर करें. नाउ we have already discussed use of IT in business, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. नेक्स्ट है यूज ऑफ IT इन गवर्नमेंट सेक्टर्स. आप एक एक एग्जांपल देते जाइए, सभी बोलते जाएंगे. ऑफ यू से समथिंग यूज ऑफ IT इन गवर्नमेंट सेक्टर, और चैट बॉक्स में आप टाइप करके भी बता सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में IT का यूज कैसे होता है. ओके, और मीटिंग्स,
for storing data. All of you say something. गवर्नमेंट सर्विसेज में कैसे आईटी का यूज हो रहा है आप सबको पता है, बोल के बताइए या चैट बॉक्स के थ्रू आप कुछ बोलिए. राघव ने बोला है यस वोटिंग, यस ईवीएम्स, ईवीएम मशीन. सोचिए आपके आसपास आप किस गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. Sir, your voice is not clear. हाँ ओके. अकाउंटिंग, what are the areas? Yes, websites, ID cards, electricity bill payment, और बताइए. Collection of taxes, yes. Through online, yes. Yes, for making Aadhaar cards. So I think use of IT in government services में तो आप काफी कंटेंट आपके पास है, आप लिख सकते हैं ना, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते. दैट यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ. ड्राइविंग लाइसेंस, इट्स वेरी नाइस. ठीक है, so we will take another application of IT in our next class. If anyone is having any doubt, they can ask now. आप पूछ सकते हैं अगर आपको अभी कोई डाउट है तो. Okay, so all of you join your hands. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam.
Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir. Sairam. Sairam to all. Sairam. Sairam. Sairam sir. Sairam.